Yes, sir. In physics, you have done a bit of electricity and electrostatics, right? Yeah, sir. Yeah. Okay, fine. Now, write the topic, quantitative analysis. Analysis of electrolysis. Quantitative analysis of electrolysis. This whole topic is also known as Faraday's law. Faraday's laws of electrolysis. Okay. So write the first law of Faraday. Write number 1. First law. Write the law, then we'll understand, and then you'll do some problems also. The mass of the substance, the mass of chemical substance deposited or liberated, deposited or liberated at an electrode is directly proportional to the current passed and time. Okay, so basically it is saying when we are doing electrolysis, then in that case, the mass that we have, the mass that is of a chemical substance that is being deposited, whatever chemical substance is being formed, is directly proportional to the amount of electricity that is denoted by I, and it is also directly proportional to the time in which that electricity, that current has been passing. And we give a proportionality constant, and we remove the proportionality constant, we remove the proportionality sign and give a proportionality constant that is equal to Z into IT. Z into IT. Now, all of you must know what is I. Current is equal to charge upon time. Say yes or no? I is equal to Q by T. All of you know this formula, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. And similarly, what I can say now, I can say that Q will be, charge will be equal to the current passed multiplied by time. So this is equal to Z into, we use capital Q in chemistry. And Q is what? Q is the charge. Z का नाम होता है electrochemical equivalent. Z is electrochemical equivalent. What is electrochemical equivalent? What is Z? See, just wait for a while. Don't write anything now. Leave your pen aside. Whenever you have to define a proportionality constant, please remember this is going to be useful in chemistry also and physics also. Whenever you have to prove or whenever you have to define a proportionality constant, you should make the variable on the side of proportionality constant. So tell me here, where is the proportionality constant, in the left hand side or the right hand side? Right Where hand do we side. have right hand side? And what is the variable on the right hand side? Apart from the proportionality constant, what is the variable there? On the right hand side, what is the variable? Q. Q. So whatever the variable is, उसको आप क्या कर दीजिएगा 1. ठीक है? So you will suppose that when the charge, ठीक है, when Q is equal to 1,
उस टाइम जो भी मास डिपॉजिट होगा, whatever the mass is deposited, when the charge is equal to 1, that is electrochemical equivalent. Understood all of you? Yes or no? Please tell me. Tarif, Rabia, Shahid, Madina. Yes, sir. All of you understood? Yes, sir. ठीक है. So क्या करते हैं? Whenever we have to define a proportionality constant, we keep the variable of that side as 1 and then we define it. So it is defined as, please write. Sorry, the mass deposited or liberated. The mass deposited or liberated when 1 coulomb of charge is passed to electrolyte. Okay, so M is equal to Z into Q. When Q is equal to 1, Z will be equal to M. Shaviz is here, I guess. Assalamu alaikum, Shaviz. How are you? Alaikum salam. How are you, Shaviz? Yes, sir. Alhamdulillah, fine. You're fine. Or are you late? Huh? Yes, sir. I was having some internet problem. Arey, internet problem. So how did you fix that? Internet was coming very slow, so I couldn't. Internet was very slow. चलिए कोई बात नहीं. Right, next. आप तो देखिए अब स्टार्टिंग में ना वही हम बोलेंगे फिर सेकंड शाविज. तो 15 मिनट पहले आप स्टार्ट करके देखिए फिर क्लास, है ना. लॉगिन हो रहा है नहीं हो रहा है, इंटरनेट कैसा है नहीं है. ठीक है. सो अ बिट ऑफ क्वेश्चन इज छोटा है आपको, उसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए. समझ में आ जाएगा अभी भी, डोंट वरी. स्टिल यू विल अंडरस्टैंड. टेक अ स्क्रीनशॉट. डन. Yeah, I hope you have taken a screenshot by now. Sir, I can just one second, just I'll text. One more. Okay, तो ना चलिए ठीक है. Yes, sir. Done. Okay. Now, one advice for all of you who use space bar to turn the mic on and turn the mic off. थोड़ा ज्यादा देर तक स्पेस बार दबा के रखिएगा, अदरवाइज आई जस्ट बस ऐसे खत्म हो जाता है फिर. ठीक है. सो ट्राई टू प्रेस द स्पेस बार अ बिट मोर. अब देखिए तो यहाँ पे पहले समझते हैं. काम की बात है हमारे पास क्या, अबाउट द चार्ज. वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द चार्ज लिबरेटेड इन ईच एंड एवरी रिएक्शन. ठीक है. यहाँ पे सुनिए. If I have I negative, don't write anything, please listen. ठीक है. Keep your pens aside. Put your pen aside and please listen. If I have one iodine and I want to convert it into I2. ठीक है. So in order to balance it, I will get half I2. Okay. Now, can Shahid, can you read this? How are you going to read it? क्या समझते हैं आप इसे? For this, from this reaction, what do you understand? Shahid. I negative forms half I2. Okay. Now, can you tell me a bit about when we write this type of reaction about the amount, like what is the meaning of I negative? There is one ion or is it something else?
Do we say it like this, that one ion of I negative gives you half I2? Should we say like that? Okay. How many of you think that we should say like that? One ion of I negative is going to give me half molecule of I2. Please raise your hand. If you're not raising your hand, then I will ask, what do you think? How should we say this statement? How should we say this reaction? Okay, Iram, बताएं. Iram, what do you understand by this? I negative giving half I2. Okay, Madhi has raised hand. ठीक है, Iram, आप बताएं. इरम को बड़ा टाइम लग जा रहा है आज माइक ऑन करने में. क्या हो गया इरम? एवरीथिंग फाइन? इरम के स्कूल में आज नीरज चोपड़ा आए थे. फोटोज देख रही हैं अभी तक आप? हाँ, तो बताइए, हाउ वुड यू रीड दिस स्टेटमेंट? दिस इज अ रिएक्शन. ठीक है, टेल मी. नहीं समझ में आ रहा, जोर से बोले इरम. You don't know. Okay, फाइजा आप बताएं, how would you read this? See, this is a chemical statement. उसको ट्रांसलेट करना सिंपल इंग्लिश में. ठीक है, फाइजा आप बताएं. There are many ways to read this statement, फाइजा. लेकिन there is one very universal way to read the statement. फाइजा waiting. Sir, one electron is gained. ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन इज गेन. वो तो इसका कॉन्सिक्वेंस है, उसमें से एक इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है. ठीक है, वेरी गुड. आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे. आप गेन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज तो बढ़ जाएगा ना. एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, राइट? इट इज गोइंग टू गिव यू वन इलेक्ट्रॉन. Yes, वन sir. इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव्ड, राइट? Yes, sir. इट्स फाइन. ठीक है, वो फाइन, कोई बात नहीं. Okay. Still not getting the answer that I want to hear. Rabia, how would you say this reaction? Yes, Rabia. So much time, so much time. खाते पीते रहते हैं क्या बच्चे? Rabia, what are you doing? क्या टाइम हो रहा है? 4 बज रहा है अभी. सो गई राबिया? अच्छा अच्छा, ठीक है, फाइन, माय बैड. सब लोग प्लीज राबिया के लिए शिफा की दुआ करें. राबिया इज हैविंग सम एक इन हर थ्रोट. ठीक है ना, अल्लाह ताला शिफा दे आपको. फिर हम लोग आपकी आवाज को सुन पाएंगे इंशाल्लाह. चलिए ठीक है, प्लीज लिसन एवरीवन हियर. When we have this type of statement, please always keep in your mind, in the back of your head. एक तो once you are looking at the reaction, you will say I negative gives half I2. That's completely fine. Half I2 in one electron, that is completely fine. But in the back of your head, there should be one reaction that is also 1 mole of I negative gives half mole of I2. Because if you go into the very detailing of one ion of I negative, अगर आपके पास एक ही आयन है I negative का, तो I2 तो कभी बन ही नहीं सकता ना. I2 does not make sense if I have only one I negative. Is this clear? Yes or no? Please tell me. बात समझ में आ रही है आपको? All of you understand this? इरम, फाइजा, शाहिद, मदीहा. शाहिद और मदीहा न्यू स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आया ये बात? Yes, sir. है ना? When I say one ion of I negative, then I2 बनेगा कैसे? एक दूसरा I negative I चाहिए ना. So what should we say? 1 mole of I negative gives me half mole of I2 and 1 mole of electron. Is this clear? Yes or no? Please tell me. What should we say? कैसे पढ़ेंगे इसको? 1 mole of I negative gives half mole of I2 and 1 mole of electron. जो भी स्टोशियोमेट्री है यहाँ पे, that is in terms of mole. That is always in terms of mole. ठीक है? अच्छा. If this reaction is requiring, it is giving you 1 mole of electron. What is the charge on 1 mole of electron? What is the charge on 1 mole of electron? ये हम आपको बताते थे. This is equal to 1 farad. Simple. ठीक है? And 1 Faraday is equal to 96. Rather, I should say, it is approximately equal to 96500 coulombs. All of you understood this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग एक सवाल देखते हैं. ठीक है, अगर आपको ये स्टेटमेंट पढ़ना आ रहा है ना, व्हाट यू नीड टू डू, एक सवाल दिया रहेगा, उससे आप रिएक्शन लिखिएगा. रिएक्शन से फिर कितने मोल इस्तेमाल हो रहे हैं वो लिखना पड़ेगा. ठीक है, चलिए प्लीज राइट अ क्वेश्चन.
calculate the charge in Faraday required to produce to produce 2 moles of I2 from Ki. ठीक है, प्लीज लिसन टू दिस सॉल्यूशन, उसके बाद आप लोग अगला सवाल कीजिएगा, ठीक है। डोंट राइट एनीथिंग, कीप योर पेन असाइड, आई विल आस्क यू क्वेश्चंस एंड फिर उसके बाद हम लोग ये करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे देयर इज वन थिंग दैट इज गिवन, देयर विल बी वन थिंग दैट इज ऑलवेज गिवन, you will be given a fixed amount of product or you will be given a fixed amount of reactant। यहाँ पे बताइए what is given, fixed, आपको क्या फिक्स किया हुआ है, reactant फिक्स किया हुआ है अमाउंट या फिर amount of product is fixed? Tell me from this question। Product is fixed। Can all of you see this? Yes or no? Please tell me। शाहिद, शाहिद आपको दिख रहा है? Yes. है ना? What is given? What is fixed here? And what is that amount? Tell me, what is that amount that is fixed? 2 moles। ठीक है, that means 2 moles of I2। Now 2 moles of I2 will require how many moles of Ki? Tell me 4. how many moles? Yes, Shavi is very good। Can सबको दिख रहा है ये चीज that we require 4 moles of Ki? Yes or no? Please tell me। Yes, sir. सबको दिख रहा है? We need 4। Why? Because 2 into 2 4, I need at least 4 iodine and 1 Ki में 1 iodine, so if I will have 4 Ki then I will get 4 iodines, right? Now in this case Ki is in the form, Ki में iodine जो आपका main item है, I negative, potassium is just a spectator ion, it is not doing anything, it is just looking the reaction happening, it is going to give you 2 I2 and how many electrons will be required? Tell me how many electrons will be removed 4 I negative से 2 I2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं? How many electrons? Oh, no one। ठीक है, हम आपको बता देते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल सा तरीका है, ये आप लोग कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज सी हियर, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन, आयोडाइड आयन यहाँ पे -1 है। यस और नो? प्लीज टेल मी। करेक्ट? Yes, sir. ठीक है, -1। और यहाँ पे आपके पास क्या है, I2 का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? 0 है। सही है? यस और नो? प्लीज टेल मी। Yes. व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट? व्हाट इज द चेंज? चेंज इज इक्वल टू, अरे चेंज कितना हुआ जल्दी बताए ना। देखिए प्लीज ट्राई टू कीप योर माइक ऑन। हाँ, एक चेंज हो रहा है ना, 1। So number of moles into 1 will be equal to the number of electrons। ऐसे लिख लीजिए, number of electrons is equal to number of electrons is equal to moles into the change in oxidation state। कितने मोल्स हमारे पास? 4 मोल्स है, चेंज कितना हो रहा है? 1। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे बताएं? How many electrons will be removed? 4. 4 electrons। ठीक है, याद रहेगा आसानी से। Yes, sir. Now 4 electrons, that means how many Faraday? 4 electrons नहीं निकल रहा। I hope all of you know 4 moles of electron। Yes or no? 4 Yes, sir. moles of electron, है ना? Because यहाँ पे 4 moles of iodine negative gives 2 moles of I2 and 4 moles of electron। So charge required is equal to how much? Charge required is equal to 4 Faraday। आसान है? Yes or no? Please tell me। आसान है? Yes or no? Please tell me। Yes. ठीक है, Yes। जल्दी छापिए। So I can just देखिए बस स्क्रॉल अप, सवाल भी नहीं लिखते हैं क्या आप शावेज? अरे सवाल तो मेरे साथ लिख लिया कीजिए शावेज, ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू मोल्स इनटू
चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो फॉर्मूला है ना आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम देगा आपको। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में ये सबसे मेन फॉर्मूला। उसके बाद एक और फॉर्मूला है जो आने वाला है, दैट इज इट। एक और फॉर्मूला वो आपने देख ही लिया है, दैट Q इज इक्वल टू IT। एक ये फॉर्मूला है, इन्हीं दोनों फॉर्मूले से सारे सवाल हो जाते हैं, ऑल दी क्वेश्चंस। शावेज जल्दी लिखिएगा आप। नेक्स्ट सवाल लिखें, जिन लोगों ने लिख लिया है प्लीज राइट क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ aluminium 3+ to aluminium, what charge in Faraday will be required? अगला क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ कॉपर 2+ to कॉपर। ठीक है, आपको बताना है how many Faraday of charge is required. Send your answer on Zoom chat. Very good. तो दो चीज हम थोड़ा करा देंगे आज, है ना। आई विल, ये तो आपका कंप्लीट हो जाएगा थोड़ा जल्दी आज, ठीक है। तो एक तो आपको करा दिया जाएगा हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। है ना, इसमें भी बहुत लोगों को दिक्कत हो रही थी। तारीफ सही है, वेरी गुड तारीफ। इरम वेरी गुड, करेक्ट। वेटिंग फॉर अदर्स, राबिया, शाहिद, शावेज, मदीहा। शाहिद वेरी गुड, करेक्ट। समझ में आ रहा है शाहिद ना? ओके। आपकी आवाज बहुत धीमी है आज शाहिद। Why is that? Can we please fix the mic? अब तो एकदम नहीं आ रही आवाज। Okay, Chavez has sent me on my WhatsApp. हाँ, ये सही है, रिएक्शन सही है, वेरी गुड। अच्छा, फाइजा ने भी, अच्छा। नहीं फाइजा देखिए, मतलब आप ये देखिए ना, हमने कैसे किया सवाल को और आप कैसे कर रही हैं। आंसर शुड बी इन फैराडे ना फाइजा। Yes, sir. तो आप इस तरह से तो नहीं कीजिए, ठीक है। आसान सवाल है। आई कैन सी दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, बट आपका जो मतलब प्रेजेंटेशन है वो गलत है। First of all, what you should do, first of all, write the reaction. Aluminium 3+ to aluminium. How many moles? 1 mole of aluminium. So how many electrons will be required? 3 moles of electron will be required, right? So what is the charge? Q is equal to the number of electrons, that is equal to 3. And what is the Faraday? 3 Faraday हो जाएगा.
ठीक है, कॉपर 2+ में क्या करना है, कॉपर 2+, मदिहा आपका आंसर नहीं आया अभी तक, चलिए मदिहा कॉपर 2+ में कीजिए। Yes, so I didn't understand this before. Now you didn't understood. I'll just do the second one. You have not understood this, ठीक है। Here we are converting 1 mole of copper 2+ to copper, right? Yes or no? Keep your mic on, Madiha. Please don't turn your mic off. ठीक है, keep your mic on. Yes. Yes. What are we doing here? We are converting 1 mole of copper 2+ to copper solid. Copper. ठीक है. Okay. Tell me, what are we doing? So there is 1 mole of copper 2+, so we'll add 2 electrons, We'll add 2 electrons. Very good. and then What we will get? What are We'll we get- getting? we'll get like Q is equal to 2 Farad. नहीं वो नहीं ना, ये प्रोडक्ट में बताइए ना क्या मिलेगा। Copper solid ना, we will get copper solid, right? Oh yeah, so ठीक है. So how many electrons are we using? 2 electrons. 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2 बस, या फिर कुछ और बताया था हमने? Or should we read this equations? मदिहा भूल गए आप तो तुरंत। Cu2 plus 2 electrons gives 2 इलेक्ट्रॉन, बस 2 इलेक्ट्रॉन। एक सेकंड मदिहा, only 2, 1 and 2. Oh, बस sorry, 3 electrons. 3 electrons. 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं, 3, no, right? not 3 नहीं 3 नहीं, कुछ मिस हो रहा है। I did not say, ये तो फिर आपको कंसेप्ट से नहीं आया, पर ये 2+ देख के आपने बस 2 इलेक्ट्रॉन बोल दिया, ठीक है, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा। बट अगेन I told you that each of these reactions should be said in a particular manner. How should we say these reactions? So Cu2 plus. No, no, listen. तो अभी तो बताया था हमने, लिखा भी होगा आपने मदिहा, देखिए। Oh yeah, Iodine so negative, 1 mole. Yeah, 1 mole of copper 2+. Yeah, copper 2 plus. Gives Plus. right. Plus हाँ, 2 electrons नहीं gives. फिर 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं, अरे 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हो? फिर से पढ़िए आप, आयोडीन नेगेटिव वाला स्टेटमेंट फिर से पढ़िए। I wrote 1 mole of iodine negative gives half mole of I2 and 1 mole of electron. And what? लास्ट में क्या कहा आपने? 1 mole of I negative gives half mole of I2 and 1 mole of electrons. How One many mole of electrons? How many electrons? 1 mole of electron. 1 mole ना, 1 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है ना? No, sir. ठीक है, तो आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए, इस रिएक्शन को पढ़िए, कैसे पढ़िए? कॉपर 1 2+ mole, वाला 1 mole of C2 plus 2 mole of electrons वेरी गुड, यही हम चाह रहे थे ना, gives 2 moles of electron. oh yeah हाँ ठीक है 2 ना, 2 moles of electron, ठीक है। और हम देखिए जनरली हम नहीं बताते, आप इरिटेट मत होइएगा, हम ना 10 बार पढ़ा देंगे आपको एक ही चीज को, लेकिन ये आंसर आपने ही दिया ना, राइट? तो अब आपकी भूलने के चांसेस कम हो जाएंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। सो व्हाट डू वी नीड? 2 moles of electron. सो व्हाट विल बी द चार्ज? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में 1 फैराडे, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में 2 फैराडे, ठीक है। वेरी गुड। नाउ आप लोग को प्लीज हमेशा ये करना, देखिए एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं, अगर हमारे पास 2 moles of copper 2+ होता, then how many electrons would have been required? Tell me. If there was 2 moles of copper 2+, then how many moles of electron would have been required? then the 4 electrons. 4 moles of electron, 4 right? तो हमेशा देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर आपको चार्ज भी निकालना तो Q will be equal to, आप सीधा लिख सकते हैं, the number of moles multiplied by change in oxidation state, ठीक है। ये जो भी वैल्यू आएगी ना, इसमें आप फैराडे लगा दीजिए, दैट विल बी द चार्ज। एज यू कैन सी, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज +2 and here it is 0. So what is the change in oxidation state? Change in oxidation state is equal to, मोल्स तो आपका 2 दिया हुआ सवाल में,
into what is the change in oxidation state? 2. So it will be equal to 4 farad. And if you understood this, yes or no, please tell me. What's in my? Yes, sir. Okay. Similarly, देखिए, write a question. 1 mole of MnO4 negative to Mn2 positive. इस केस में कैसे करेंगे? Please see, I will write the reaction first of all. I'll write MnO4. यहाँ पे एक और चीज देखिए, लोग बच्चे थोड़ा घबराएंगे इस बात के लिए, सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन आप लिखते ही नहीं है, सिर्फ MnMn आप लिख रहे हैं. तो वैसे दैट सी, यहाँ पे you have to focus. We only require Mn here. ऑक्सीजन का यहाँ पे रोल ही नहीं है. That is why I'm not caring about oxygen right now. Our main motive is that we have to calculate the charge. We don't have to balance the equation. सब कुछ नहीं चाहिए. I will show you the एक ना आंसर शीट्स होता है जो सीबीएसई रिलीज करता है, सो दैट द टीचर्स हु आर चेकिंग द पेपर दे कैन रेफर टू दैट. ठीक है, इस वाले इसमें जानते हैं यू विल नॉट हैव एनीथिंग. फॉर एग्जांपल ना, अगर आपको ये सवाल आ गया 2 moles of Cu2 + 2 कॉपर, ये रिएक्शन वगैरह उसके प्रोसेस में नहीं रहता है. यू विल जस्ट सी आंसर 4 फैराडे. तो आपने अगर स्टेप नहीं लिखा है ना, तब भी वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स 4 फैराडे वाला ही मिलेगा. दैट मींस सीबीएसई केस ओनली अबाउट व्हाट इज द चार्ज. यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए आपको कोई नहीं कुछ बोलेगा कि इफ यू आर नॉट बैलेंसिंग द ऑक्सीजन, व्हाट इज द रिएक्शन हैपनिंग वो देखिएगा. MnO4 negative is getting converted to Mn2+. Now, how many of you can calculate the oxidation state of manganese in MnO4 negative? Raise your hand if you can calculate the oxidation state of manganese in MnO4 negative. Okay, no problem. होता है, 11th क्लास की चीजें लोग भूल जाते हैं. ठीक है, please see. Generally, oxygen is equal to -2. Group 1 is equal to +1. Group 2 is equal to +2, and group 3 is equal to +3. and halogen को X से डिनोट करते हैं. halogen is equal to -1. याद रहेगा सबको ये सुनो प्लीज में, इतना आप करके रखिए. ठीक है, तो now in MnO4 negative, please see MnO4 negative. What should we take the oxidation state of Mn? We take that as X. We don't know. Plus, how many oxygen do we have? We have 4 oxygen multiplied by the oxidation state of oxygen. Oxygen का क्या होता है? -2. Generally -2. This will be equal to the overall charge on the ion. The overall charge on the ion, it is equal to -1. Tell me what is the value of X? What is the value of X? 7. Very good. +7. ठीक है. Now +7 से +5. What is the change? 2. What is the change in oxidation state? Tell me. +7 से +2. What is the change in oxidation state, guys? -1. माइनस प्लस नहीं, चेंज में सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना रहता है. Once again, what is the change in oxidation state? 5, sir. 5 बोलेंगे. ठीक है, क्या बोलेंगे? 5. Very good. And what is the number of moles? How many moles do we have? 1. 1. 1. ठीक है, अब बताइए Q will be equal to how much? Moles into oxidation state Faraday. Moles कितने आपके पास? 5. 5 into 1, 5 Faraday. Understood? Yes or no? Please tell me. आया Yes, आपके दिमाग में ख्याल है में आपको? ठीक है, चलिए. राइट, नेक्स्ट एक आप लोग सवाल कीजिएगा. ठीक है, प्लीज देख लीजिए जरा हमने किस तरह से किया है ना, एंड ट्राई टू जस्ट मिमिक दैट. राइट, प्लीज राइट 1 mole of FeO to Fe2O3. ठीक है, so you have to calculate the oxidation state of Fe in FeO and then Fe in Fe2O3. What is the oxidation state here? What is the oxidation state here? You will get the delta OS and then
1 mole है, तो you will multiply 1, then that is the Faraday you are going. Yes, Iram, very good, correct. Shahid, very good, correct. So, you can send the answer in Zoom chat itself, okay? WhatsApp will take zero. Iram, Shahid, correct. Tarif आपका, okay. Madhya, can you please turn your mic on? Tell me what you are asking. Yes, So Madhya. you have to calculate. Yes, sir. You have to So calculate the oxidation state. yes, sir. For FeO and Fe2O3 separately, right? हाँ, FeO का अलग से निकले. FeO में किसका निकाल रहे हैं आप ऑक्सीडेशन स्टेट? Fe. Fe का. ठीक है, कैसे निकाल रहे हैं? X, right? Yeah, X plus -1 is equal to 1. एक सेकंड. -1. Why -1? Because oxidations, because there's oxygen there. हाँ, ऑक्सीजन में कितना होता है? -1. Oh, sorry, -2. Sorry. ओके, फिर भी आगे बोलिए आप. Yeah. -2 is equal to -1. why 1? Because there's What is the overall charge here? Do you see 1. any charge overall? 1 charge, 0 charge है. चार्ज 1 रहता तो हम यहाँ पे लिखते हैं ना, +1 -1 कुछ भी, राइट? Okay. हाँ. Yeah, sir. Oh, yeah, sir. वाटर में क्या चार्ज होता है? वाटर में बताइए, कोई चार्ज होता है? No. नो ना. ठीक है, उसी तरह कोई बात नहीं, होता है, नो प्रॉब्लम. इज इक्वल टू 0. सो व्हाट विल बी x विल बी इक्वल टू 2. +2. ठीक है. Yes. एंड यहाँ पे बताइए Fe के लिए क्या करेंगे? Fe, it will be 2x वेरी गुड. plus I mean 2x minus 6 is equal to 1. 1. Oh, फिर sorry, 1. 0. 0, 0. I'm sorry. 0 जी, कोई बात नहीं. 0. And then हाँ. 2x is equal to 6, then x is equal to 3, plus 3. वेरी गुड. ठीक है. दिस इज Yeah, so +2, दिस इज +3. व्हाट इज द चेंज? -1 or like अरे 1 मैग्नीट्यूड लिया था. मैग्नीट्यूड क्या है चेंज बताएं फिर से. 1. ठीक है. मोल्स इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स? so what? Like the change in moles is 1 only, right? Not change in moles. How many moles do we have? Number of moles 1. is equal to 1, है ना? So Q will be equal to 1. 1 Faraday. Yes. चलिए,
तारीफ आपका 2 कैसे आ रहा था? And Sir, many calculation did not error. answer. Acha. Faiza, what happened? No answer from you. Faiza. Yes, Sir, Faiza, I what couldn't. happened? I realized my mistake, sir. I didn't put a 2 with the X in the second Fe2O3. अच्छा 2x की जगह आपने अच्छा ठीक. Yes. So here we have to find the oxidation state of Fe. या दोनों केस में ठीक है. उसके बाद चेंज देखना है आपको एंड देन वंस यू गेट द चेंज नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया ही हुआ है. प्लीज राइट इट डाउन. So right, next question. $20 grams of calcium from calcium chloride. 20 grams of calcium को आपको पहले किस में करना कन्वर्ट? नंबर ऑफ मोल्स में. ठीक है. 20 grams of calcium मतलब how many moles? Then you got the moles, then you will write the reaction. From the reaction, you will get the change in oxidation state, and then you can get the charge. What is the molar mass of calcium? 40. Yeah, correct. From here, you can calculate the number of moles. After calculating number of moles, you will just write the reaction, calculate change in oxidation state. Yeah, correct. Shahid, very good, correct. What happened? एक ही आंसर आया.
Let me know if you're stuck, guys. Please let me know if you're stuck. What happened? What is stuck? Iram, क्या हुआ? What happened, Iram? Faiza, what happened? Matiha, Rabia, Shavez, Tarif. No answer from you guys. Iram, बताएंगे क्या हुआ? What happened? Calculate calcium Okay. oxidation state of calcium. हमको समझ ही नहीं आया क्या बोला आपने. Can you please say it again, Shavez? We have to calculate the oxidation state of calcium. पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया आपने? Yes. ठीक है. फिर उसके बाद रिएक्शन क्या लिखा आपने, बताइए. Half mole of calcium chloride gives half mole of calcium plus 2 moles of chloride. Sorry, 1 mole of chlorine gas. You have to get 20 grams of calcium from CaCl2. What is the reactant and what is the product, Shavez? रिएक्टेंट कौन है यहाँ पे? कैल्शियम क्या है? रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? Calcium is the react. Yes, Shavez, sorry. Calcium is the product. Calcium is the product. Very good. Calcium chloride will give you calcium, right? Yes. ठीक है. कैल्शियम में, कैल्शियम क्लोराइड में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम? नहीं पता. अरे भाई, सी, और इफ यू रोट दिस थिंग ना, ये आप पूछिएगा ना सर इसमें से, अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता चल रहा है तो. यस मदिहा, वेरी गुड, करेक्ट. हाइड्रोजन का कितना होता है? -1. ठीक है, अभी हमको कराना ही पड़ेगा लगता है. सी, कैल्शियम का x + 2 × -1 is equal to 0. So x will be equal to +2. Now when calcium is in its elemental state, तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा? It will be 0 here. ठीक है, जैसे कॉपर का हमने बोले तो क्या था ना, कॉपर 2 + से कॉपर, तो कॉपर का +2 था यहाँ पे, कॉपर का यहाँ पे 0 था. When you don't have anything on copper, it is going to be 0. So what is the delta OS? Delta OS is equal to how much? 2. Yeah, very good. And moles is equal to what? The given mass, that is 20, divided by the molar mass, that is 40, that is equal to 1/2. ठीक है. So Q will be equal to the number of moles, that is 1/2, into the oxidation state, that is equal to 2, that is change in oxidation state is equal to 2, it will be equal to 1 Faraday. ठीक है. Also remember, always put the unit. If you are not going to put the unit, then half marks will be deducted in your board examination. शावेज, समझ में आया आपको ये वाला? yes or no, please tell me. Yes, yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए. 1 mole of H2O, 2O2. चलिए जल्दी बताइए, H2O में क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन O2 में कितना है? What is the oxidation state of H2O? What is the oxidation state of oxygen in H2O? देखिए इतना टाइम लग रहा है. What is the oxidation state? Yes, Madiha, tell me. Sir, 2? ना? Yeah, ऑक्सीजन का कितना था? ऑक्सीजन का -2 Yeah, होता है. -2. And what is the oxidation state here in the product O2 में क्या है oxidation state? H2 is 1. 2? Whenever anything is in their 0? elemental state, हाँ 0, very good. ठीक है, कोई भी अगर एलिमेंटल स्टेट में होगा ना, अपने नेचुरल पोजीशन, अपने नेचुरल अकरेंस के स्टेट में होगा, नेचुरल स्टेट में होगा, तो वहां पे 0 होता है. ऑक्सीजन अगर किसी और के साथ लगा हो, तब वहां पे कुछ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. इफ ऑक्सीजन इज इन इटसेल्फ, हाइड्रोजन इज विद इटसेल्फ, कैल्शियम इज विद इटसेल्फ, किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, देन इट इज गोइंग टू बी 0. सो इन दिस केस व्हाट इज द चेंज? डेल्टा ओएस इज इक्वल टू 2. moles is equal to how many moles? 1 mole, na? So Q will be equal to 2 Faraday. So once you are done writing this, please write this question. The solution of NiNO3 whole twice is electrolyzed between platinum electrodes using 5 amperes
current of 5 amperes for 20 minutes. What mass of nickel is deposited at cathode? What mass of nickel is deposited at cathode? सवाल को लिखिएगा, then you will do this question. Let me know once you're done. Done? सवाल देखिएगा यहाँ पे. In the previous cases, they were asking you about the charge that is required. Okay, to convert from this to this. Now what they are asking, they are giving you the current, they are giving you the time. From current and time, you will get the charge, and from that charge, you have to tell me the number of moles. और फिर उस मोल से आपको क्या बताना है? उस मोल से आपको number of, उस मोल से आपको मास बताना है. ठीक है? It's a bit lengthy, but the concept is same here also. ठीक है? The concept is same here also. In the previous cases क्या बोल रहे थे वो? चार्ज बताने बोलते हैं. अभी उन्होंने चार्ज दे दिया है in the form of current and time. Then you have to calculate the number of moles and then the mass. So first of all, here, what we are going to do, we are going to look at the Ni, nickel, NO3 whole twice is giving you, is going to give you what? Nickel, right? I mean, आपके पास ये reaction हो रहा है. So what is the oxidation state here? Nickel का oxidation state क्या है? What is the oxidation state here? The reactant side. हाँ जी, ओके. देखिए पॉलीएटॉमिक आयंस का आपको चार्ज पता होना चाहिए. SO4 पे कितना चार्ज होता है? व्हाट इज द चार्ज ऑन SO4? नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे. हाँ, सॉरी, वंस अगेन, हाउ मच चार्ज? फिर से, अरे इतना जल्दी माइक ऑफ कर देते हैं जी. बोलिए. 2 माइनस, वेरी गुड. NH4, NH4 पे क्या चार्ज होता है? ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको केमिस्ट्री में ले डूबती हैं. नो नॉट, नो 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 नो, शायद इट्स नॉट प्लस होता है. ठीक है, उसी तरह से CO3 में कितना होता है? CO3 इज 2 माइनस. उसी तरह से NO3 क्या होगा? NO3 is going to be NO3 is going to be 1 minus. ठीक है, NO3 negative. So what will be the oxidation state here? निकल का क्या हो जाएगा? X plus 2 into minus 1 is equal to 0. So X will be equal to plus 2. And here X is equal to 0. So change in oxidation state is equal to 2. ठीक है, change in oxidation state आपको पता चल गया, तो आप लोग अभी रखते हैं. Now you have to calculate the charge. You know that Q is equal to I into T, but please remember time should be in seconds. Time in seconds, and आपको जो Q मिलेगा, you will get Q in form of what? Tell me. Q क्या मिलेगा आपको किस फॉर्म में? फैराडे के फॉर्म में या कूलम के फॉर्म में? कूलम के फॉर्म में. Q in coulombs. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा जरा. Now Q into IT, I is equal to how much? 5 into time is equal to 20 into minutes को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो multiplied by 60. So this will be equal to how much? 5 to the 10, 100. 100 into 6, 600 into 10, 6000 हो जाएगा. 6000. Yes or no, please tell me. Yes. 6000 coulombs. ये आपको क्या मिला है? चार्ज मिला है. Now you will convert this charge to what? Faraday.
1 Faraday is equal to 96500 coulombs. ठीक है, so what I can write, 1 coulomb is equal to 1 upon 96500 Faraday. तो coulomb को रिप्लेस करके हम क्या लिख देंगे, 6000 coulomb को रिप्लेस करके लिख देंगे by 96500 Faraday. इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं है ये बताएं. Yes, sir. All of you understood this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes. So from here what we have got the Faraday. कि आपको इतना Faraday चाहिए था. Now here we have got the change in oxidation state is equal to so how many moles? ऐसे ले सकते हैं, 2 Faraday is required to deposit 1 mole of nickel. सही है ना? 1 मोल ऑफ निकल के लिए कितना चाहिए आपको, 2 Faraday चाहिए. According to this electrons delta OS. Yes or no? Please tell me, guys. All of you understand this statement? 2 Faraday is required to deposit 1 mole of nickel. Sir, here 2 NO3 is oxidation state is -1. ये बहुत लेट पहुंचे हैं आप शावेज. यस, जिस तरह से SO4 2 नेगेटिव पे चार्ज 2 नेगेटिव होता है, उसी तरह से NO3 में नेगेटिव होता है, 1 नेगेटिव होता है. Okay. Okay. Tell me about this statement, guys. 2 Faraday is required to deposit 1 mole of nickel. ये लिख सकते हैं? Yes or no? Please tell me. Yes. What about Yes. others? Era. आ रहा है ना मदीहा? What about you? All of you understand this ना? Yes or no? नहीं आ रहा? किसी को थोड़ा सा भी डिफिकल्टी हम एक्सप्लेन करने बोल देंगे, किसी को एक्सप्लेन कीजिए कैसे. Tell me if you have any difficulty in the statement. मदीहा? Sir, no, No? sir. No, sir. इरम? ठीक है. Hmm. 2 Faraday is required to deposit 1 mole of nickel. ठीक है. That means I can say 1 Faraday will give half mole of nickel. उसी तरह से 6000 upon 96500 Faraday will give 6000 upon 96500 into half mole of nickel. ये समझ में आया सबको? हाँ या ना बताएं? Yes, sir. Sir, how is that here 2 Faraday is required to deposit 1 mole of nickel? अरे यही तो शावेज हम पहले इतना पूछ रहे थे आपको, आप ये अभी आप कैसे सवाल कर रहे हैं बताइए तो. See, I'm not saying कि आप सवाल नहीं कर सकते, but this is not good for you ना. When I asked you ना about this statement, 2 Faraday is required to deposit 1 mole of nickel. आपको समझ में आया या नहीं आया शावेज? Yes or no? पूछा था या नहीं पूछा था हमने? ये शावेज तेरे पूछा था या नहीं पूछा था हमने? Yes, sir. यानी कि आप यस सर ऐसे ही बोल देते है ना? आपको समझ में नहीं आता तब भी आप यस सर बोल देते. Sir, I understood but I forgot. You understood and then you forgot. Okay, see here, no problem. लेकिन इस तरह से मत कीजिएगा, ठीक है ना? इससे लय बिगड़ जाता है शावेज, है ना? अगर आपको इसलिए मुझे थोड़ा सा भी डाउट है तो उसी टाइम पूछ लीजिए कि सर थोड़ा सा इसको और इलैबोरेट कर दीजिए. Here you can see na what is the change in oxidation state. How many moles of electrons are required? 2 moles. 1 mole. 2 moles. Keep your mic on, Shavish. Keep your mic on. 2 moles. 2 moles. Sir. Keep your mic on. I'm saying हमने नहीं बोला 2 moles 4 moles बोलने के लिए, ठीक है? Please see what I'm asking. 2 moles of electron is required to give 1 mole of nickel. ये आया समझ में आपको? Yes, sir. Yes. एक थोड़ा देर हम रुक जाते कहीं आप भूल जाए तो, ठीक है? थोड़ा सा देख लीजिए एक बार फिर से शावेज. समझ में आ रहा है ना? Yes. ठीक है. Now 2 moles will have what charge? What will be the charge on 2 moles of electron? 2 Faraday. अब आया समझ में आपको? Yes. 2 Faraday is required to give 1 mole of electron, है ना?
Yes. So this much charge is present in the electricity that we are passing. This many moles of nickel will be given to you, and mass of nickel deposited आप क्या लिख दीजिएगा? This many moles है, the mass of nickel deposited will be equal to, what is the molar mass of nickel? नहीं पता. 58.5. ठीक है, mass of nickel deposit will be equal to the molar mass, that is 58.5 multiplied by 6,000 divided by 96500 into 1/2 grams में आ जाएगा. छाती. किसी भी एलिमेंट का अगर आपको निकालना मास डिपॉजिटेड, देन व्हाट यू हैव टू डू, the molar mass multiplied by charge in coulomb divided by 96500 into 1 upon oxidation state, 1 upon change in oxidation state. सबने लिखिए yes or no, please tell me. Yes, sir. देखिए सवाल को देखिए. C electrolytic cells A, B and C containing electrolytes of zinc sulfate, silver nitrate AgNO3 and copper sulfate CuSO4 respectively are connected in series. A steady current of 1.5 ampere was passed through them until 1.5 grams of silver were deposited. ठीक है, of silver were deposited at the cathode of cell B. आपको क्या दिया हुआ यहाँ पे? You have been given that I is equal to 1.5 amperes and you have been given the mass deposited of silver that is deposited, that is equal to 1.45 grams. ठीक है, they are asking how long did the current flow and what weight of copper and zinc is deposited. सवाल देखिए सबने, yes or no, please tell me. All of you saw the question, yes or no? Yes, sir. ठीक है, अभी देखिए हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था. Mass deposit is equal to the molar mass into charge in coulombs divided by 96500 upon change in oxidation state. ठीक है, यहाँ पे we have to first of all see what is the change in oxidation state. ठीक है, बाकी बात चीजें आपके पास हैं. Now 1 mole of mass we have converted Ag. Ag का हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे. AgNO3 is getting converted to Ag.
Oxidation state of Ag will be equal to how much? Tell me. What will be the oxidation state of Ag here? NO3 का कितना है? 1. Yes. Ag. What will be the? Tell me. Oxidation state of Ag चार्ट में बताएं. Oxidation state of Ag चार्ट में बताएं. Very good, शाहिद. अभी हमने बताया NO3 का लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना? सबका आंसर आना चाहिए. NO3 का अभी आपको बताया गया. No, Shav is wrong. Idam correct, very good. ध्यान नहीं है शावेद आपका. फायजा सही है, वेरी गुड. वेटिंग फॉर मदीहा, राबिया, तारीफ. मदीहा, राबिया एंड तारीफ. राबिया, मदीहा करेक्ट, वेरी गुड. राबिया, व्हाट अबाउट यू? तारीफ, व्हाट अबाउट यू? सॉरी. देखिए 1 मिनट नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना? आई डोंट नो व्हाई यू गाइस आर टेकिंग सो मच टाइम. Here Ag will be equal to x and NO3 का हो जाएगा -1, ठीक है? Add both of them, you should be getting 0, so x will be equal to +1. अगर आप लोग पेन नहीं उठा रहे हैं, आप लोग को लग रहा है कि हम देख देख के बता देंगे, then it is not going to do any good to you. So here you have +1. What is the oxidation state of Ag in this side, in the product side? Oxidation state of Ag in the product side. What is the oxidation state of silver in the products? जोर से बोलिए शामिल. 0. Very good. Yes, Madina 0 correct. What is the change in oxidation state? Change in oxidation state will be equal to 1. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, ऐसे मास डिपॉजिटेड कितना है आपके पास? 1.45 is equal to what is the molar mass of Ag? What is the molar mass of Ag, guys? What is the molar mass of Ag? 108. Okay. 108. हाँ, 108 into चार्ज इन कूलम्स को क्या लिख सकते हैं हम? I into T, ठीक है, डिवाइड बाई 96500 into 1/1. चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, 1/1, ठीक है ना? आपको यहाँ पे क्या निकालना? टाइम निकालना. आई भी दिया हुआ है. 1.45 is equal to 108 into I is given as 1.5 into time upon 96500. So time will be equal to 96500 multiplied by 1.45 divided by 108 into 1.5. ठीक है? You will get the time from this equation. देखिए कितना आ रहा टाइम. टाइम जो आएगा ना आपका, दिस विल बी इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स. What is the time that you are getting? All of you understood now? Yes or no, please tell me. Yes, sir. Yes. ठीक है, इसको याद कर लीजिए, ये बहुत आसान देगा आपको. मास डिपॉजिट इज इक्वल टू मोलर मास इनटू चार्ज इन कूलम्स. चार्ज इन कूलम्स को आप क्या लिख सकते हैं? Q into IT भी लिख, Q into I भी लिख सकते हैं, सॉरी I into T भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 96500 इनटू 1 अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. कितना आ रहा टाइम, जल्दी बताएं. Okay.
How many of you are getting 864 seconds or 863 seconds? इसमें से कुछ मिल रहा होगा आंसर. 864 और 863. So I'm getting 861. 861 नहीं 864 मिलेगा. ठीक है, कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा होगा, but it is fine. 864 seconds. ठीक है, so you have got the time. Now they are asking what weight of copper and zinc get deposited. तो कॉपर और जिंक के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द रिएक्शन. पहले लिखिए कॉपर के लिए, फॉर कॉपर CuSO4 gives you copper. Oxidation state of copper will be how much? Oxidation state of copper will be how much? Oxidation state of copper in the reactant side. Pfizer जोर से बोले. 0. In the reactant side. SO4 पे क्या चार्ज होता है वो? +2. Very good. In the product, oxidation state of copper 0. Change in oxidation state 2. change in oxidation. Very good. ठीक है, ये निकल गया आपके पास. तो mass deposited will be equal to how much? Molar mass of copper is equal to how much? What is the molar mass of copper? 63.5 into what? Charge in coulombs. Charge in coulombs क्या है आपके पास? I into T. What is I? I is equal to 1.5. Time is equal to 864. We have just calculated. Divide by 96500. Multiplied by 1 upon how much? 1 upon 2. 2. ये आपके ग्राम्स में. ठीक है. Similarly, देखिए for zinc also. Sorry. ZnSO4 gives you Zn. This is +2. यहाँ पे 0. Change in oxidation state here is also equal to 2. In this case, the mass will be equal to, what is the molar mass of zinc? It is equal to 65. ठीक है, 65 into same charge 1.5 into 864 upon 96500 into 1/2. समझ में आया सबको? yes or no? Please tell me how to do these type of questions. ये जो अभी सवाल कराया ना हमने, this was the toughest question that you can have in this case. ठीक है, आपके NCERT में भी है, तो पहले ही बहुत बार आ चुका है. This question usually comes in 3 marks या फिर कभी कभार 5 marks से भी आ जाता है. बस कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है यहाँ पे, otherwise everything is fine. For copper you are going to get 0.426 grams, and for zinc I think you are going to get 0.436 grams. ठीक है, तो हमने जैसे कि कहा था आपके पास देयर आर ओनली 2 फॉर्मूलास. एक फॉर्मूला क्या है आपके पास? नंबर ऑफ मोल्स, और रादर आई शुड राइट Q is equal to the number of moles
into the change in oxidation state. This will be in Faraday. और अगर आपको इसको कूलम्स में करना है तो moles into change in oxidation state into 96500. ठीक है, एक ये फॉर्मूला है आपके पास, and the other formula is Q is equal to IT. Here Q will be in coulomb, I will be in ampere, and T will be in seconds. ये आपको ध्यान रखना है तब आप, and from moles what you can calculate, from moles you can calculate the mass. एक बार moles निकल जाए आपको पूरा mass calculate करना है. Either they will ask you the charge, कितना charge चाहिए, or they will give you I and T, and they will ask you what is the number of moles. ठीक है, so these are the different types of questions that you can get. चलिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, लॉग्स के बारे में पढ़ लेते हैं. ठीक है, बहुत मेनी ऑफ यू आर हैविंग डिफिकल्टी इन लॉग, थोड़ा लॉग को देख लेते हैं, एंड देन यू विल हैव द टेस्ट ऑन दिस टॉपिक ओनली. ठीक है, आफ्टर दैट यू विल हैव अ टेस्ट ऑन दिस टॉपिक ओनली. सबको ही टेस्ट दीजिएगा प्लीज, ठीक है ना, उससे समझ में आएगा कि आपको ये कितने समझ में आया नहीं समझ में आया. Sir, ऑल इफ यस टेल मी. can you just scroll up? अब ठीक है, इतना Little more. Yes. टेक अ स्क्रीनशॉट शाविस, आई विल वेट फॉर 5 seconds. 2, 1 and then take a screenshot from here. Yes, I do. Okay. चलिए ठीक है, logarithms. Logarithm is basically, what is logarithm? It is brother of exponents. ठीक है, I will take one example, that is log of with base 10, log of 100 with base 10 is equal to 2. ठीक है, आप इस वाले पूरे फॉर्मूले पे याद रखिए. ठीक है, and what does it mean? It means that 10 to the power of 2 is equal to 100. ये किसका अलग दूसरा फॉर्म है, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का ये अलग फॉर्म. ठीक है, तो बेसिकली लॉग क्या बोलता है, 10 टू द पावर ऑफ व्हाट विल बी इक्वल टू 100. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट log of 1000 and when I write log and there is no base here, अगर हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, that means it is 10. So tell me what will be the answer here. Log of 1000 will be equal to how much? So what they are asking, 10 to the power of how much is equal to 1000. बताइए y की वैल्यू क्या होगी? What 3. will be the value? All of you 3. can see that, yes or no? बाकी लोग को समझ में आया? सबको समझ में आया? शावेज, what did you say, शावेज? Please, sir. देखिए शावेज, आपने प्लीज थोड़ा माइक ठीक करा लीजिए, किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा, आई होप दैट. ठीक है ना, नॉट दैट ओनली माइक, ईयरफोन्स आर बैड. माइक आप थोड़ा सा चेंज कराने की सोच. ठीक है, एक चीज तो ये हो गई आपके पास. ठीक है, आपको समझ में आएगी व्हाट इज लॉग. देन देयर आर फ्यू रूल्स ऑफ लॉग, उसको ध्यान में रखना है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट रूल आप लिखिएगा, log of a into b is equal to log of a plus log of b. For example, if I have log of 7 into 2, then this is equal to log of 7 plus log of 2. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, log of a upon b is equal to log of a minus log of b. For example, if I have log of 6 by 3, log of 2 by 3, then this will be equal to log of 2 minus log of 3. अभी उसी तरह से इसी के एक्सटेंशन में देखिएगा, if I have log of a into a, क्या लिखेंगे, it will be equal to log a plus log a is equal to क्या हो जाएगा, 2 बार log a है तो it will be equal to 2 log a. And log a into a को क्या लिख सकते हैं, log of a square. देख रहे हैं, this 2 is coming in front. इसी से एक रूल आता है, that is the power rule of log.
log of a to the power of b will be equal to b into log a. b into log a. For example, अगर आपके पास हो log of 2 to the power 3, then this will be equal to 3 times log of 2. All of you understood this? Yes or no? Please tell me यहाँ तक. Yes, sir. ठीक है. अब देखिए कुछ log की वैल्यूज आपको पता होना चाहिए. Log of 1 will be equal to how much? बताइए. 10 to the power of x is equal to 1. 10 to the power how much is equal to 1? 0. 0. So log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. Similarly, tell me log 10 कितना होना चाहिए? Log 10 should be equal to 10 to the power how much? हाँ, very good. बाकी लोग का आंसर क्यों नहीं आ रहा है? एक ही फायदा ही बस आंसर करनी है. What happened? शाहिद आपको नहीं आ रहा है क्या? शाहिद आपको आ रहा है? Sorry. Yeah, I'm understanding. Understand. ठीक है. मदीहा, what about you? समझ में आ रहा है? Madiha, I'm asking you something. Oh, it seems Madiha. ठीक है. अब देखिए दूसरी चीज जो हमने देखा डिफिकल्टी आप लोगों का, that was converting decimals to powers of 10. ठीक है. यहाँ पे देख लीजिए 1, for example 0.001, this will be equal to how much? 10 to the power? Tell me guys, 10 to the power how much? -3. ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए. The number of digits after decimal उसी का नेगेटिव आपको लिख देना -3. ठीक है. अच्छा 0.01 का होल स्क्वायर, this will be equal to 10 to the power -2 का whole square. This will be equal to 10 to the power -4. Okay. Now another thing, 1 upon 0.001. This will be equal to how much? 1 upon 10 to the power -3. This -3. ये डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में आएगा तो क्या हो जाएगा? 10 to the power +3. ठीक है, बात सबको समझ में आ रही है? आया ना बताएं. Yes, sir. ठीक है. अब एक एग्जांपल हम आपको करके दिखा देते हैं. Log of 0.01 का स्क्वायर अपॉन 0.1 का क्यूब. ठीक है. Whenever you get log ना, तो पहले डेसिमल्स को आप लोग पहले क्लैरिफाई कर ले, डेसिमल में बोल क्या रहा है. So you write log of 10 to the power -2 का स्क्वायर अपॉन 10 to the power -1 का क्यूब. This will be equal to log of 10 to the power -4 upon log of 10 to the power -3. ठीक है. Now this will be equal to log of 10 to the power -4 + 3. सही है? हाँ या ना बताएं. Yes, sir. This will be equal to how much? Log of 10 to the power -1. Log of 10 to the power -1 है, तो -1 अब नीचे आ जाएगा, तो -1 into log 10. और log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? What is the value of log 10? 1. 1. ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई? -1. So this is equal to -1. बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है. Now write a few things more. There are 4 log values that we have. एक तो आपको पता ही होगा, log 0 is equal to log 0 नहीं, log 1 is equal to 0. ठीक है. log 2 is equal to 0.30. ये आपको याद रहना चाहिए. log 3 is equal to 0.48. ये आपको याद रहना चाहिए. log 5 is equal to 0.70. ये आपको याद रहना चाहिए. एंड log 7 is equal to, इसका रिवर्स कर दीजिएगा, 3 का रिवर्स 0.84. ठीक है. ये बेसिकली 4 लॉग वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी चाहिए. बाकी आप लॉग वैल्यूज इससे डिराइव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल टेल मी log 4. log 4 को क्या लिख सकते हैं? log of 2 to the power 2. This will be equal to 2 times log 2, which will be equal to 2 times 0.3, which will be equal to 0.6. बात समझ में आ रही है? Yes, sir.
ठीक है, log 4 निकल गया, इसी तरह से बताइए। नेक्स्ट क्या रिमेनिंग है, 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6। log 6 को कैसे लिख सकते हैं, टेल मी, फैक्टराइज कीजिए log 6 को। 6 का फैक्टर क्या होगा, log log 2 log 2 plus log 3. log 2 plus log 3 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 into 3 पहले लिखेंगे, and then we will write log 2 plus log 3. Very good. Log 2 is equal to 0.3 plus log 3 is equal to 0.48. This will be equal to how much, 0.78. Now tell me what is log 8 का value in the chat please. पहले फैक्टराइज कीजिए log 8 को, कैसे फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने आता है ना, 8 को इस तरह से करते हैं ना आप लोग, 244 2 2 इस तरह से, वो फैक्टर्स करने आपको। टेल मी log 8 की वैल्यू क्या आएगी इन द चैट, जूम चैट में बताएंगे log 8 की वैल्यू क्या आएगी। Shahid has given an answer. Tarif correct, Shahid correct, very good. बाकी लोगों को क्या हो गया, इतना टाइम लगेगा। I'm going to give you 1 minute more. Faiza correct, very good. Shaviz correct, very good. इरम का आंसर नहीं आया अभी तक। What happened, इरम? राबिया का आंसर नहीं आया, राबिया is a bit ill. Understand? मदीहा 2 डिवाइस से हैं, फाइजा 2 डिवाइस से हैं, क्या भाई? इरम, what happened? इरम, Iram, are you there? What happened? Iram is not here. Yes, Rabia, correct, very good. Iram, आपका आंसर नहीं आया। Fine, I think Iram is not here. See, log 8 को क्या लिख सकते हैं, log of 2 into 2 into 2, तो क्या हो गया, 2 का क्यूब हो गया। So I can write this as 3 into log 2 which will be equal to 3 into 0.3 which will be equal to 0.9. log 9 की वैल्यू बताएं, what is the value of log 9? What is the value of log 9? Yes, Faiza, correct, very good. Shaviz, correct, very good. सर Yes, Iram, जी बताएं। मेरा नेटवर्क स्टेबल नहीं, प्लीज समझा नहीं यहाँ से। कहाँ से नहीं समझा आपको, log 4 से? यहाँ से मैं लॉग, इंटरनेट स्टेबल नहीं था। ये जो आपने एक्सपैंड किया ना log 6 का, वहाँ से log 4 डिस्कनेक्ट हो से गया। आप log 4 से आपको समझ में नहीं आया? देखिए, जब भी आपको मिले ना, अब आप log 4 नहीं करेंगे, अब हम लोग थोड़ा बड़ा नंबर करेंगे, ठीक है रम? हम लोग करेंगे log 18। क्या करेंगे, log 18 कर लें, log 18 कर लेते हैं। क्या करना है बताते हैं आप। 18 को फैक्टर करने आता है आपको? कैसे करेंगे बताइए, फैक्टर्स ऑफ 18 रम? 2 सा, अरे बोलिए तो इरम। 9 सा 9 सा, उसके बाद या जी जी 3 3, फिर नीचे 3 क्या लिखेंगे इसको आप, log of 2 into 3 into 3 ना। लॉग का रूल बताइए और उसके हिसाब से इसको एक्सपैंड कीजिए।
By the way, log 9 is equal to 0.96. सभी का आंसर सही आया, वेरी गुड। जी राम, बताइए कैसे इसको खोलेंगे? अरे माइक तो ऑन करके रखिए, समझा रहे हैं आपको हम स्पेशली। डिस्कनेक्ट हो गए log क्या? 2 log 2 plus log 3 plus log 3 plus log 3. plus log 3। ठीक है, log 2 की वैल्यू 0.30, 30 log 3 की वैल्यू 0.48 0.48. प्लस log 4 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू 0.48 है ना? ठीक है, समझ में आ गई? हाँ। अब log 4 कर लेंगे, बताइए log 4 का क्या होगा? log 2 into 2 2 into 2 कैसे लिखेंगे इसको? log log 2 plus log 2 प्लस log 2, बोलिए 30 0.3 प्लस 0.9 sorry 0.6. 0.3 log 6 का बताइए। log 6 0.78. ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? यस और नो प्लीज टेल मी। सबको लॉग समझ में आया? Yes, yes, sir. यस। Yes, sir. मदीहा, व्हाट अबाउट यू? शाहिद, व्हाट अबाउट यू? Understood. अंडरस्टूड ना? ओके, ठीक है, चलिए। तो अब आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। टेस्ट में ये लॉग नहीं आएगा, वॉट एवर वी हैव डन प्रीवियसली ना, जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस था उसको करेंगे हम। उसके आपके पास सवाल दिए जाएंगे, सिर्फ 5 क्वेश्चंस, ठीक है ना? उनको ट्राई कीजिए एंड देन वी विल मीट ऑन नेक्स्ट क्लास जो आपके ट्यूसडे को होगा। ऑल्सो वन मोर थिंग, देखिए, एक तो तारीफ भाग गई, टेस्ट का नाम सुनते ही तारीफ निकल जाते हैं। फॉरगॉट टू मेंशन दिस, दिस इज नॉट फॉर राबिया एंड, राबिया के लिए तो है, शाहिद और मदीहा के लिए नहीं, ठीक है? दिस फॉर इरम, फायजा, राबिया एंड शावेज। शावेज, आपने नस्ट इक्वेशन किया ना मेरे साथ? Yes. ठीक है, so tomorrow you will be having test on Nernst equation. ठीक है, I'm again saying only numericals. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे वहां पे? सिर्फ और सिर्फ आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे एंड द टेस्ट टाइमिंग विल बी, क्या रखा था 4:30 IST और 2 PM KST, both of these are PM। किसी को कोई दिक्कत? Ulmi, Iram, Faiza, Rabia and Shavez, any problem? No, sir. Mhm. ठीक है, सबको देना टेस्ट।